फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। पढ़ने के मामले में वो अच्छा है, बोलने के मामले में मैं तेज हूँ, चलने के मामले में तुम तेज हो, लिखने के मामले में वो खराब है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ मीन के मामले में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure in the sense of plus verb plus ing plus sentence. In the sense of plus verb plus ing plus sentence. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. पढ़ने के मामले में वो अच्छा है डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। इन द सेंस ऑफ रीडिंग ही इज गुड, इन द सेंस ऑफ रीडिंग ही इज गुड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलने के मामले में मैं तेज हूँ, इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग आई एम शार्प, in the sense of speaking I am sharp. Next example for better understanding. चलने के मामले में तुम तेज हो, in the sense of walking you are fast, in the sense of walking you are fast. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can influence you. Next example. लिखने के मामले में तुम खराब हो, in the sense of writing you are bad, in the sense of writing you are bad. सीखने के मामले में वो कमज़ोर है, सीखने के मामले में वो कमज़ोर है। in the sense of learning he is weak, in the sense of learning he is weak. Next example for better understanding. खेलने के मामले में तुम अच्छे हो, खेलने के मामले में तुम अच्छे हो, in the sense of playing you are good, in the sense of playing you are good. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. बोलने के मामले में तुम अच्छे थे। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हकीकत में तुम होशियार हो, हकीकत में हम जा रहे हैं, हकीकत में वो पागल है, हकीकत में वो वहाँ नहीं गया था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हकीकत में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन फैक्ट। इन फैक्ट मीन हकीकत में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. In fact प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिसन सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हकीकत में तुम होशियार हो, हकीकत में तुम होशियार हो ये डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। इन फैक्ट यू आर क्लेवर, इन फैक्ट यू आर क्लेवर। इन फैक्ट ये फार्मूला है दैट मीन हकीकत में, यू आर क्लेवर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हकीकत में हम जा रहे हैं, इन फैक्ट वी आर गोइंग, इन फैक्ट वी आर गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हकीकत में वो पागल है, हकीकत में वो पागल है, इन फैक्ट ही इज मेड, इन फैक्ट
he is made. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important. That can take you from basic to advanced level. Next example. حقیقت میں وہ وہاں نہیں گیا تھا. In fact, he did not go there. In fact, he did not go there. حقیقت میں تم اچھے ہو. In fact, you are good. In fact, you are good. Next example for better understanding. حقیقت میں وہاں نہیں جاؤں گا. In fact, I will not go there. In fact, I will not go there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. حقیقت میں وہ کمرہ صاف کر رہی ہے. حقیقت میں وہ کمرہ صاف کر رہی. تھرڈ ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. کھانے کے بعد وہ بتائے گا. کام کرنے کے بعد ہم جائیں گے. پڑھنے کے بعد میں سو جاؤں گا. اس سے ملنے کے بعد تم سے ملوں گا. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسی جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look at complete structure. After plus verb plus ing plus sentence. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. کھانے کے بعد وہ بتائے گا. ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. After eating he will tell you. After eating he will tell you. کام کرنے کے بعد ہم جائیں گے. کام کرنے کے بعد ہم جائیں گے. After working we will go. After working we will go. Next example for better understanding. پڑھنے کے بعد میں سو جاؤں گا. After studying I will sleep. After studying I will sleep. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So watch this video to end and learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be better for your academic career. Next example. اس سے ملنے کے بعد میں تم سے ملوں گا. After meeting him I will meet you. After meeting him I will meet you. Next example for better understanding. کھیلنے کے بعد وہ وہاں جائے گا. After playing he will go there. After playing he will go there. Next example for better understanding. سیکھنے کے بعد میں سکھاؤں گا. سیکھنے کے بعد میں سکھاؤں گا. After learning I will teach you. After learning I will teach you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. As I told you before that every advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level that could be better for your academic career. چلنے کے بعد ہم چائے پیئیں گے. چلنے کے بعد ہم چائے پیئیں گے. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.